बिल्कुल बिल्कुल। अरे मुझे लगता है कि जो भी सिनेमा लवर है, जो बचपन से सिनेमा देखते आ रहा है, हीरो बनना किसे पसंद नहीं है और वो भी यार। एक्शन हीरो। Any actor, any stage in their life would want to grab with both their hands. And Jaanbaaz felt like the best opportunity to make that step. Hi guys, this is Regina Cassandra. Hi, my name is Chandan Roy. And you're watching us on Koimoi. Koimoi. Hi guys, Grunal here from Koimoi. Hi. We always love talking about people who dedicate their lives, their energies, and even those people whose families are associated with saving the nation and protecting the people. Well, talking about the same and bringing to life a real event is the cast and crew of Jaanbaaz Hindustan ke. And to talk about their series, the 8-episode series, is Regina and Chandan. Hi guys, welcome to Koimoi. Yeah. Hi, thank you. Thank you so much. Firstly, a big thank you to both of you and your entire team for bringing to life a real life story that talks about the heroes of our country. Thank you. That's a really big thing to actually do for your country. What are your thoughts? First of all, how did this series happen? And then I'll get back to my next question. How did the series happen? Why did you all say yes to this particular series? There are many reasons why I said yes to this. One is that I worked with Juggernaut previously on Shurveer, and they happened to come to me with this show as well. And I had no reason, to turn it down when I heard. So they came to me with it when they were, in the story basis itself, and they were scripting and, doing their drafts and all of that. I was pretty happy that they could see me play such a character. And then when I knew that Srijit Mukherjee is directing it, it was all the more interesting for me to want to be a part of this show. And then the character itself is something I haven't played before. And this is my 5th OTT show, and I'm headlining a show. Being the lead protagonist. And I feel like that's something that any actor at any stage in their life would want to grab with both their hands. And Jaanbaaz felt like the best opportunity to make that step. While we know about your role as Kavya Iyer, I want to know, Chandan, what about your role? What exactly do you play? We know Kavya is a headstrong cop who won't stop at anything to keep that everyone's safe. Can you tell us a little about your character? Yeah. ये कैरेक्टर एक हैकर का है जो भारत के लिए हैकिंग करता है, दुश्मनों से बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए हैकिंग करता है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि दिखता बहुत आम सा है, लेकिन कांड बहुत बड़े-बड़े कर देते हैं। तो जो हमारे मेकर्स थे, उनका ये आइडिया ही था कि चूँकि हमारे ना स्मॉल जगह, मतलब नो डाउट हर जगह के लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जो छोटे-छोटे शहर के होते हैं ना, जो जुगाड़ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, वो ऐसे-ऐसे कांड कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये दिखने में बड़ा सम्मानित आदमी लगता है, लेकिन हाँ, जी। तो ऐसा उनका आइडिया था। तो मुझे ये कहानी बड़ी अच्छी लगी। चलो यार, कुछ है इसमें। और दूसरी बड़ी बात कि इस तरह के मैंने कैरेक्टर किए नहीं थे, है ना? तो मुझे लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो मिला भी, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। इसमें भी मेरा नाम चंदन झा है, तो चंदन झा को करते हुए बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो एक्साइटिंग था, इसलिए मैंने हाँ किया। ओके, बहुत एक्साइटिंग था, और जितना एक्साइटिंग था, हम लोगों को सबसे ज्यादा थ्रिल तो उसके एक्शन सीन्स के साथ हुआ था। रेजिना, आपने तो बहुत सारे एक्शन सीन्स किए, यहाँ से छलांग, वहां पे किक, पंचेस। तो हाउ वाज योर prepping for this show? Did you get hurt or anything while prepping and practicing your stunts?
Interesting enough, I feel like my body in itself, like my physical appearance in itself, comes across as someone who is able to do these things. And I'm a pretty strong person. I have really big hands and feet and broad shoulders. And I mean, I could pull off even a boxer at the end of the day if I had to. I have always been used to this, especially over the last 2 years. I have been used to doing fight scenes that I probably wasn't used to, in the sense like knowing the techniques behind things and all of that. In the last 2 years, which is very interesting now that I think about it. I have built my career itself has been a practice run towards playing a role like this. You know, right from holding the gun, knowing how to do it, and having enough practice to make it look like this is someone who does this as easy as brushing their teeth. You know, I did have rehearsals before fight scenes, so we know what we're doing, what kick is being punched, because it's a choreography at the end of the day. Yeah. So I think a good amount of practice through my career has definitely helped. I enjoy doing these things. That's this thing. You know, there was this fight scene that we were doing towards the end of our shoot, and I didn't necessarily have too much training for the scene till the day we did it as well. Okay. And when you see the show, and if you see the show, you'll see, I hope they've kept it also. I haven't really seen that bit of it. I do a flip over somebody, and I had no harness or anything like that. So I'm just thrown like that over their body. And it was not someone who's also used to fighting. Like, this is by another actor. And even they need to understand the mechanisms of doing it. So we did it about 3-4 times, and then that day I was fine. I had a little, I felt a little stiffness in my neck. But the next day I woke up and I couldn't move my neck at all. It was so bad because the muscles around my spine had all tightened because of the way I was falling. I was falling on my back. So I couldn't even wake up. I couldn't do this. Which is then very interesting. Now, for me, this was a learning experience. So I understand now how much my body can take at the age that I am at, how much I can push it. And tomorrow, if I have to do something like this, I know exactly how to tackle it. So, that's how I prepared. And for me, I've always been the kind of person to cross the bridge when I come to it. That's how I tackle most of my situations in life. So till I have to deal with something, I don't really think about it. But okay. You see, this show is about you all fighting the next flights and all, and and facing the terrorists of the country. Did you all, while shooting the series on field or anything, did you all come across people who actually had real stories to share with you all to understand your characters better? No, I didn't actually have anyone to talk to as such, but I did, Sanjukta Parashar's name had come about quite a bit, even when the writers were writing it at the writing stage and stuff. And she was someone, her life was something that I tried to dwell into. Okay. And there are a lot of similarities that we have drawn from her life and put into Kavya Iyer's character. And I think there's a lot of realness and rawness in that. So So Chandan, what about you? Did you come across any real stories of people telling you, sharing with you, or any hackers for that matter? किसने आपके साथ शो स्टोरी शेयर किए to I think इसके बाद ना बहुत hackers आपको मैसेज करेंगे Instagram पे कि कोई insights देगा
नहीं, ऐसा था कि मेरे कैरेक्टर को जरूरत ही नहीं थी कि कुछ इस तरह चाहिए, क्योंकि इसका ब्रीफ ही बहुत सिंपल था कि तुम आम आदमी जैसे दिखोगे और बहुत रियल जैसा रहेगा सब कुछ मामला। तो जरूरत नहीं थी, अगर जरूरत होती तो मैं जरूर कुछ इस तरह का अपने एंड से भी शुरू करता, लोगों से मिलता, कुछ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता, बट बहुत सामान्य सी थी। और मुझे लगता है ये इसीलिए अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं इसलिए मैं जल्दी से कनेक्ट कर पाऊंगा आम लोगों से। वरना अगर थोड़ा सा जरूरत होती तो मैं वो करता, लेकिन जरूरत नहीं थी इस कैरेक्टर में। क्या आप चाहते थे कि आपके कैरेक्टर को भी कोई एक्शन सीन्स मिलते, कि किसी को पंच मारो या कुछ वैसा, हाँ कि सिर्फ आप हाँ कुछ हाँ टक 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 करो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मुझे लगता है कि जो भी सिनेमा लवर है, जो बचपन से सिनेमा देखते आ रहा है, हीरो बनना किसे पसंद नहीं है और यार। वो भी एक्शन हीरो। यस, तो चाहता हूँ कि जम के एक्शन करूं, और दिली ख्वाहिश है कि कभी मार खाऊं भी हीरो से। मतलब एक ऐसा विलन बनूं कि हीरो जब मुझे मारे तो पब्लिक भी कह रहे यार मेरे विलन को मत मारो यार। कुछ ऐसा विलन अच्छा। है ना। सारे डायरेक्टर्स ये सुन भी लो, चाहिए, वो प्रोड्यूसर्स भी देखते प्लीज। चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो चूंकि एक अभिनेता के तौर पे आप दोनों करो तो मजा है ना, सिर्फ एक ही चीज करोगे तो फिर काय का। तो बोल्ड मैं तो मूव है चाहता ना हूँ वो। कि दोनों, हाँ हाँ हाँ, जहां तक है मेरे अंदर जो भी पोटेंशियल है सब आए, और हर तरह कैरेक्टर करूं। जाने से मतलब ऊपर जाने से पहले ये मलाल ना हो कि यार मैंने ये नहीं किया यार, सिर्फ एक ही तरह करता रह गया ना। सब कुछ करो, है ना, तभी तो मजा है ना पॉइंट है। एक अभिनेता के तौर पे। बिल्कुल यार। आप दोनों एक्चुअली बहुत सारे सीरीज कर रहे हो आजकल। कोई ये है कि कोई मूवीज आ रहे हैं आप दोनों के दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू? कोई मूवीज या फिर हाँ जी। सीरीज ही है आप दोनों के पास करंटली? I do have quite a few films in the South that are ready for release. Hopefully, one of my Tamil films releases in Feb. ओके। And I have another Telugu film that should release in April, March or April. So, yeah, it's films that is there. I mean, series, like you said, there are quite a few. Rocket Boys is coming in soon, season 2. And Yeah. I'll soon be working on Shurveer season 2 as well. So, Yeah. I'm not leaving the OTT space anytime soon. बहुत सारे सून्स है। 2023 Yeah. seems very busy for you. Very busy, Regina. What about you, Chandan? What are your हाँ, plans? चलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। तो 26 को हम सबका बहुत प्यारा, और हम लोग ने बहुत मेहनत किया है, वो इसी महीने 26 को आ रहा है जानबाज। उसके बाद आएगा गुलमोहर हॉटस्टार पे। ये फिल्म है, इन्हें राहुल चित्रेरा ने डायरेक्ट किया है, कमाल का फिल्म है ये। उसके बाद एक और फिल्म आएगी मिस्टर सक्सेना, मैं और जिम्मी सर हैं उसमें, जिम्मी शेरगिल, पुष्पेंद्र मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। उसके बाद आएगा लखोट, अमेजन प्राइम का शो है, बहुत कमाल का शो है। उसमें मैंने जो प्ले किया है वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। और उसके बाद नेटफ्लिक्स का एक शो है चूना, अगेन उसमें मैं हूँ और जिम्मी सरगिल हैं, और भी कई सारे कास्ट हैं उसमें। और उसके बाद आएगा, रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है, और रमेश सिप्पी प्रोडक्शन हाउस का है। ये एक सिटकॉम है, 13 एपिसोड का। मैं, कुणाल रॉय कपूर और ताहा, हम तीनों खूब लोगों को हंसा रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा, पता नहीं, अभी मैं भूल रहा हूँ। सोच जी, 2023 में 23 प्रोजेक्ट्स है आपके अरे इस साल। मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसके बाद आएगा पंचायत सीजन 3। ओके। Wow. हाँ जी। तो काफी मिल तो सकती हूँ मैं आपसे डिजिटली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक और क्वेश्चन है आप दोनों से कि ये शो जो है रियल लाइफ पे बेस्ड है, तो अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप कौन से रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर या पॉलिटिशियन पे मूवी करना चाहोगे? प्ले दोस कैरेक्टर्स, वो वाह, इंसान कौन होगा आपका चॉइस? What वेरी were नाइस। the options?
which politician or police officer or service person you would love to play on screen? उनके biopic में या फिर कोई भी movie that has them. Wow, I haven't thought about this at all. I can't really think right now. I can't really. Come to a blank. Yeah, I'm drawing a proper blank. Yeah. तब तक मैं ही जवाब दे देता हूँ, ठीक है? किसको प्ले करना चाहोगे? हाँ जी, हाँ जी। मैं अगर मुझे ऐसा कुछ मौका मिले तो मेरे जहन में अभी 2 नाम आ रहे हैं जो मतलब मैं काफ़ी उनसे प्रेरित रहा हूँ। हालाँकि पता नहीं उनको कब तक फ़ॉलो मतलब कहाँ तक फ़ॉलो किया है, बट मुझे ना कलाम साहब बहुत मतलब उनका शुरू से एंड तक देखें तो वो एकदम हीरो जैसे हैं मेरे लिए, है ना? तो कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, बट पता नहीं संभव है कि नहीं है। और दूसरा जो अभी थोड़ी देर दूसरे इंटरव्यू में मैंने कहा है, वो है अभिनंदन वर्धमान जो शायद 2019 की घटना है जब उनका प्लेन पाकिस्तान में क्रैश कर गया था, फाइटर। तो मुझे ऐसा मतलब वो इंसान मुझे ना एकदम हीरो जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि ये रियल हीरो है यार। वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी जान हथेली पे लेकर के। तो मतलब मैं जरूर करना चाहूंगा। ये मेरे रियल हीरो हैं। That's true. रेजिना, जब आपको याद आएगा तो प्लीज ड्रॉप इन कर लो एक मैसेज कि आप किसको प्ले करना चाहते हैं। Done. Done. I would It really might love take to. some time, but yeah, for sure, done. No problem. I'm still thinking about this. Now I'll actually like, I don't know. Give it some thought. Definitely give it some thought and do some more research as to who would I actually want to play. Okay, just before we leaving, what are your thoughts about the South Indian film? Like RRR is currently on the global scale. It's not just being talked and loved abroad, but it's even winning awards there. Like it just won the Golden Globe and now it's in the race for an Academy, the Oscars. So what do you have to say about Indian films, especially South Indian films reaching such heights? Oh my God, I can't even begin to tell you how wonderful it feels as a South Indian. You know, just being proud about the fact that something from your, you know, your upbringing, your culture, your lineage, your everything is finally getting the recognition that it hasn't gotten till date. You know, RRR was one of the best possibilities that we could produce in the South that could reach that extent and compete at that extent. We always thought we had a long way to go. That for the longest time, that's how it was. We have a long way to go. We have a long way to go. We have a long way to go, and it's finally here. I mean, we have seen a lot in 2022 as a world, and in 2023 to begin the year with something like this, it definitely gives, like anything that has pioneered, definitely gives everyone else a lot of hope and faith also in the fact that, you know, we need to just keep moving forward and we will reach the goal someday. I'm just so happy, and I'm ecstatic for the entire team of RRR. You know, it is not just the South. There's also the North that was a big part of making it. Yes. And that is India. It was made by a South Indian filmmaker, yes. We have South Indian actors, we also have North Indian actors. It's a pan-Indian film. Yes. It's not a South Indian film. It is made by South Indians. It has predominantly a lot of South Indian actors and technicians working, but it's an Indian film at the end of the day. Yeah. And that's the biggest thing, right? I mean, right. art and cinema and everything is to be inclusive and
it's not just about winning a Golden Globe or being nominated for an Academy Award. It's about how have you brought this together? How have you inculcated that? So I think on the whole, it does make me very, very, very happy. It is. Chandan, what about you? आपको इसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है कि रजीना मैम ने इतना बढ़िया आंसर किया, कुछ छोड़ा ही नहीं है मेरे लिए। तो मुझसे आप कुछ और सवाल कर लो। आज के लिए मेरे पास आपके लिए और सवाल नहीं है, बट आपने जितने प्रोजेक्ट्स बोले हैं वो टाइम में आपसे जरूर क्वेश्चंस पूछूंगी, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज होने वाले हैं, तो कुछ बाकी के लिए इंटरव्यूज के लिए भी रखना पड़ेगा ना। तो हम बार-बार मिलने वाले हैं। बार-बार मिलने वाले हैं। Anyway, lovely talking to you guys. Before you leave, can you give a final message to all your fans who will watch this show? Wow, क्यों नहीं? चंदन जी, आप जाइए। हाँ जी। तो मैं जितने भी लोग मुझे पसंद करने वाले हैं, प्लीज यार, हम लोगों ने बड़े शिद्दत से, मेहनत से ये शो बनाया है, तो जिस तरह से आपने मुझे प्यार दिया है, इस शो को भी उसी तरह से प्यार देना। अगर कहीं लगी कुछ गलती कर दिया है मैंने, तो प्लीज माफ कर देना। नया हूँ, सीख रहा हूँ। अभी धीरे-धीरे बहुत कुछ करना बाकी है, तो अपना समझ के माफ करना अगर मैंने कहीं गलती करी हो तो। बट शो बहुत बढ़िया बना है, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत लोगों की मेहनत, दिन-रात उन्होंने मेहनत करा है। पूरा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक घूम-घूम के हमने शूट किया है। बड़े मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए कि आप अपने फैमिली के साथ जब बैठें, शो को देखें, तो कुछ पल के लिए मैं आपको एंटरटेन कर सकूं। बस यही एक चाहत की वजह से हम लोगों ने इतना मेहनत करा है। तो प्लीज जानबाज हिंदुस्तान के इनको बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रजीना, आपका कोई मैसेज है फैंस के लिए? Firstly, thank you for such a nice response to the trailer and the teaser and everything that we put out of Jaanbaaz. 26th Jan, it's releasing on 26th of Jan, and I'm so happy. I mean, we have other releases also happening, but I feel like this is going to be, if it's for my fans alone, I think I've done justice to this role in a certain way. I've definitely put my blood, sweat, and tears into this. All three, I promise. Yeah. I will always try to keep doing my best to entertain my fans, because that's what I have signed up to do. And thank you so much for your love and support. It really does mean a lot, especially on a bad day. So please do keep that love and support coming in, and thank you. Thank you. Lovely talking to you.